Dear students, I'm here with another interesting story. But before moving ahead, I have a question for you. Many of you might be having some dog, cat, or any other domestic animal as a pet in your house. But have you ever thought of keeping a monkey as a pet in your house? If your answer is no, then you are very lucky. Because if you will keep a monkey in your house as a pet, तो आपके घर का हाल भी वैसा ही हो जाएगा जैसा कि हमारी स्टोरी के दादाजी के घर का हुआ. You really want to know what happened to grandfather's house? So come, let's find it out in the second chapter of Moment Supplementary Reader, The Adventures of Toto, written by Ruskin Bond, who is an award-winning Indian author of British descent. He's 87 years old and lives in Mussoorie in Uttarakhand. He has written hundreds of short stories, essays, and books for children. This chapter of ours is also an extract of a book written by him. Dear students, हमारी इस ह्यूमरस और एडवेंचरस स्टोरी का सेंट्रल कैरेक्टर है एक नॉटी और प्रिटी मंकी नेम्ड टोटो. राइटर के ग्रैंडफादर टोटो को एक टोंगा ड्राइवर से खरीदते हैं और उसके बाद टोटो जो प्रैंक्स करता है ग्रैंडफादर के घर में, वो स्टोरी को इतना इंटरेस्टिंग बना देते हैं कि कोई इसे पूरा पढ़े बिना रह ही नहीं सकता. So why should we lag behind? Here we go. Grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough. And the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. So we read that grandfather ने टोटो को एक टोंगा ड्राइवर से 5 रुपीस में खरीदा. टोंगा ड्राइवर उस लिटिल रेड मंकी को एक फीडिंग ट्रॉफ के साथ बांधे रखता था. फीडिंग ट्रॉफ मतलब एक ऐसा कंटेनर जिसमें डोमेस्टिक एनिमल्स को चारा खिलाया जाता है. तो मंकी वहां पर इतना ऑड लगता था कि ग्रैंडफादर ने ये डिसाइड किया कि वो उस लिटिल फेलो को अपने प्राइवेट जू में ऐड कर लेंगे. प्राइवेट जू का मतलब यहाँ पे है कि ग्रैंडफादर को एनिमल्स का इतना शौक था कि उन्होंने एक अपना प्राइवेट जू बना रखा था, छोटा सा. अब कौन कौन से एनिमल्स उनके जू में थे, इसका पता करने के लिए हमें स्टोरी को आगे ऐसे ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ते रहना पड़ेगा. Dear students, we read a phrase out of place here, which means inappropriate or odd. We can make it sentence like this: I felt out of place among foreigners. Try your own sentences also. तो आइए अब जानते हैं कि टोटो में ऐसी क्या बात थी कि ग्रैंडफादर उसको देखकर इतना अट्रैक्ट हो गए. टोटो was a pretty monkey. His bright eyes sparkled with mischief beneath deep-set eyebrows, and his teeth, which were a pearly white, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. But his hands looked dried up, as though they had been pickled in the sun for many years. Yet his fingers were quick and wicked, and his tail, while adding to his good looks, grandfather believed a tail would add to anyone's good looks, also served as a third hand. He could use it to hang from a branch, and it was capable of scooping up any delicacy that might be out of reach of his hands. तो यहाँ हमने पढ़ा कि टोटो एक प्रिटी मंकी था. उसकी चमकीली आंखें उसकी घनी आईब्रोज के नीचे शरारत से चमकती थी और उसके टीथ पर्ल्स की तरह व्हाइट थे, यानी मोतियों की तरह व्हाइट थे, और जो शरारत से ऐसे मुस्कुराते थे कि वृद्ध मतलब बुजुर्ग एंग्लो इंडियन लेडीज भी डर जाती थी. और उसके हाथ ऐसे ड्राई थे, यानी ऐसे सूखे थे जैसे मानो सदियों से उनको धूप में सुखाया गया हो. पिकल की तरह का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे मामा लोग जब अचार बनाते हैं तो उसको धूप में रखते हैं ना सुखाने के लिए, बस ठीक वैसे उसके हैंड्स थे. लेकिन उसकी जो फिंगर्स थी वो बहुत तेज और शरारती थी, और उसकी जो टेल थी वो उसकी खूबसूरती को और अधिक बढ़ा देती थी.
वैसे दादाजी का ये मानना था कि जो टेल होती है वो किसी को भी खूबसूरती को बढ़ा सकती है, लेकिन उसकी जो टेल थी उसके लिए थर्ड हैंड का भी काम करती थी। वो ब्रांचेस पे उनसे लटक सकता था और कभी कभी किसी टेस्टी डिश को ऐसे उठा लेता था वो टेल से जो काम उसके हैंड्स नहीं कर पाते थे। Dear students, in this paragraph we read a word wicked, which is an adjective. Adjective, as you know, tells the quality of a noun. It means that wicked, which is an adjective, is telling the quality of fingers of Toto, which were very quick and wicked. Wicked here means mischievous also, beside bad. Okay, so we can make it sentence like this: that boy has a wicked sense of humor. Here we read another new word also, that is delicacy. Delicacy means tasty dish. Its synonyms are sweet, smoothness, softness, tenderness, speciality, and many more. Besides synonyms, let's explore its antonyms also. They are roughness, inelegance, indelicacy, feebleness, etc. Now let's move ahead. Grandmother always first when grandfather brought home some new bird or animal. So it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood. Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall, where he was tied securely, or so we thought, to a peg fastened into the wall. राइटर हमें बता रहे हैं कि जब भी ग्रैंडफादर कोई न्यू बर्ड और एनिमल घर लाते तो ग्रैंडमदर हमेशा नाराज हो जाती। फर्स्ट मीन्स नाराज हो जाना। इसलिए ये डिसाइड किया गया कि टोटो की प्रेजेंस को एक सीक्रेट रखा जाएगा तब तक जब तक वे अच्छे मूड में नजर नहीं आती। ग्रैंडफादर ने और मैंने उसे एक छोटी सी क्लोजेट मीन्स अलमारी में, जो कि मेरी बेडरूम की वॉल की तरफ खुलती थी, वहां पे पक्का सिक्योरली मतलब पक्का बांध के रखा गया एक पेग यानी हुक, जिस पर कपड़े लटकाए जाते हैं। दीवार के साथ उसे पक्का बांध दिया गया। एटलीस्ट राइटर और ग्रैंडफादर को तो यही लगा। Dear students, in this paragraph we found a new word, farsund, which is a verb. It means to close or join together the two parts of something. For example, fasten your seat belts please. Dear students, तो आइए अब देखते हैं कि टोटो ने उस क्लोजेट के अंदर क्या-क्या मिस्चीव्स की। A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster. The peg in the wall had been wrenched from its socket, and my school blazer, which had been hanging there, was in shreds. I wondered what grandmother would say, but grandfather didn't worry. He seemed pleased with Toto's performance. So what we read कि कुछ घंटों के बाद जब मैं और ग्रैंडफादर टोटो को रिलीज करने के लिए गए तो हमने पाया कि दीवारें जो दादाजी के पसंद किए हुए किसी डेकोरेटिव पेपर के साथ कवर की गई थी, अब वहां पे सिर्फ ब्रिक एंड प्लास्टर यानी ईंट और प्लास्टर बचा था, और वो पेग यानी वो हुक जो कि दीवार पर लगी थी वो अपनी जगह से खींच दी गई थी, और मेरा स्कूल का ब्लेजर जो कि वहां पे लटका था अब टुकड़े टुकड़े हो चुका था। मैं सोचने लगा कि दादी क्या कहेंगी, लेकिन दादाजी को तो कोई चिंता ही नहीं थी। वे तो टोटो की परफॉर्मेंस से खुश लग रहे थे। Dear students, in this paragraph we found a new word, shreds, which can be used both in noun and verb as well. It means tear into pieces. टुकड़े टुकड़े कर देना. Its synonyms are fragment, piece, tatter, strip, crumb, bit, scrap, speck, and there are many more. तो आइए अब देखते हैं कि ग्रैंडफादर ने टोटो की इस परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहा। He is clever, said grandfather. Given time, I'm sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window.
ग्रैंडफादर ने कहा, यह क्लेवर है। अगर उसे टाइम मिलता तो मुझे पक्का विश्वास है कि वो तुम्हारे ब्लेजर के टूटे हुए टुकड़ों की रस्सी बना लेता। रोप मीन्स रस्सी, और विंडो के रास्ते भाग जाता। His presence in the house still a secret. Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarters, where a number of grandfather's pets lived very sociably together. A tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while, my pet goat. But the monkey wouldn't allow any of his companions to sleep at night. So grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. So here we read that टोटो की प्रेजेंस घर में अभी भी सीक्रेट रखी जा रही थी। अब टोटो को एक बड़े केज में, जो कि सर्वेंट के क्वार्टर्स में था, वहां पर ट्रांसफर कर दिया गया, और वहां पर ग्रैंडफादर के बहुत सारे पेट्स आपस में फ्रेंडली होके रहते थे। एक टर्टल्स, एक रैबिट्स का पेयर, एक टेम स्क्विरल और मेरी पेट गोट। लेकिन मंकी अपने किसी भी कंपेनियन यानी किसी भी साथी को रात में सोने ही नहीं देता था। इसलिए ग्रैंडफादर, जिनको अगले दिन देहरादून जाना था सहारनपुर से अपनी पेंशन कलेक्ट करने के लिए, उन्होंने ये डिसाइड किया वे उसे भी अपने साथ ले जाएंगे। Dear students, in this paragraph we found a new word, sociably, which means in a friendly way. Sociably is an adverb. Adverbs, as you know, are words that are used in sentences to describe the meaning of a verb, an adjective, or even another adverb. Or in a simple language, we can say adverbs tell us how something is done. For example, adjective is social, which is a quality, and adverb is sociably. So dear students, up to this part of the chapter, we have read two important questions from exercise portion, which are very important from examination point of view also. The first one is, how does Toto come to grandfather's private zoo? And its answer lies in the very first paragraph of the chapter. Yes, you might have got. Grandfather liked to collect animals and made a zoo at home. One day, he saw a red-colored monkey with a Tonga driver. He liked the monkey and bought Toto from the Tonga driver for a sum of 5 rupees. I hope it is clear to you. Our second question is, Toto was a pretty monkey. In what sense is Toto pretty? You have read its answer in second paragraph of the chapter. Toto was pretty. He had bright shining eyes which were full of mischief. His teeth were like pearls. His long tail further added to his good looks. You must have understood it very well now. So dear students, what do you think? What will happen now? Grandfather has decided to take Toto to Dehradun with him, ताकि बाकी एनिमल्स शांति से रह सकें। लेकिन शरारती टोटो अपनी शरारतों से बाज तो आ नहीं सकता। अब वो वहां जाकर क्या क्या हरकतें करेगा और ग्रैंडफादर को कैसे परेशान करेगा, इसका पता हमें नेक्स्ट वीडियो में चलेगा। So, if you have liked this video, then subscribe to the channel. We will meet soon in the next video. Till then, keep enjoying learning English. Thank you.